Hello everyone, how are you all? Yesterday we studied adjustment from LIFO to FIFO and these are some formulas जो हमने कल पढ़े थे कि जब हम LIFO से FIFO पे जाएंगे तो जब LIFO अकाउंट्स को FIFO अकाउंट में कन्वर्ट करेंगे तो हमको क्या क्या एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे. So these are the formulas which we have studied yesterday. Today what we are going to do, today we are going to solve this example. हम ये एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे एंड विल ट्राई टू फाइंड आउट. हम LIFO से इसको सॉल्व करेंगे इस एग्जाम्पल को. देन विल ट्राई टू कन्वर्ट दोज LIFO अकाउंट्स इनटू FIFO अकाउंट्स और फिर देखेंगे कि सही में ये जो फॉर्मूले हैं हाउ दीज फॉर्मूलाज एक्चुअली वर्क. ठीक है. नाउ इन दिस एग्जाम्पल हमने डेटा लिया है हाइपोथेटिकल 2023 का एंड टू सिंप्लीफाई द एग्जाम्पल हमने ये माना है कि बिगिनिंग वैल्यू ऑफ LIFO रिजर्व की 0 है. देयर इज़ नो बिगिनिंग वैल्यू ऑफ LIFO रिजर्व और एंडिंग वैल्यू जो भी LIFO रिजर्व की आएगी उसमें से इसको माइनस करेंगे वही चेंज भी हो जाएगा. राइट. वी वुड रिक्वायर कैश एंड वी वुड रिक्वायर इक्विटी. हमको कैश और इक्विटी की वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी. क्यों पड़ेगी सर कैश और इक्विटी की वैल्यू की ज़रूरत? बिकॉज वी हैव टू कैलकुलेट FIFO कैश एंड वी हैव टू कैलकुलेट FIFO शेयर होल्डर्स इक्विटी एंड वी ऑल्सो हैव टू गेट द टैक्स रेट. हमको टैक्स रेट की भी ज़रूरत पड़ेगी तो वी अस्यूम द टैक्स रेट इज 30%. हम 30% टैक्स रेट अस्यूम कर लेंगे. यहाँ पे लिखा नहीं है बट विल अस्यूम द टैक्स रेट इज 30%. तो वी हैव द कैश बिगिनिंग वैल्यू ऑफ कैश, वी हैव द बिगिनिंग वैल्यू ऑफ शेयर होल्डर्स इक्विटी एंड वी हैव द बिगिनिंग वैल्यू ऑफ LIFO रिजर्व विच इज 0. नाउ वी हैव सम ट्रांजेक्शंस which took place in the year 2023. The 4 transactions that took place in January, April, August and December. It is purchase, sale. We purchased 100 inventory and this is the price at which we purchased at the price of 10. Then we sold 40 quantity at the price of 20. Then again we purchased in the month of August 80 quantity at the price of 15 and then we sold 50 quantity at the price of 20. Right. Now we can solve this example using perpetual method or periodic method. It won't make any difference whether we are following perpetual method or periodic method. तो हम इसको solve करते हैं, start करते हैं. देखो first of all what we'll have to do, सबसे पहले हम करेंगे इसको LIFO से यहाँ पे ले लेते हैं. ये बिगनिंग वैल्यूज़ की ज़रूरत हमको बाद में पड़ेगी तो हम बाद में बिगनिंग वैल्यूज़ पे जाएंगे. सबसे पहले हमको सेल्स कैलकुलेट करनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल विल प्रिपेयर द अकाउंट्स फॉर LIFO फॉर्म. LIFO अकाउंट्स, तो LIFO अकाउंट्स में विल स्टार्ट विद सेल्स. विल कैलकुलेट द सेल्स ऑफ द फॉर्म. सेल्स तो सेम आएगी FIFO LIFO में. देयर वोंट बी एनी डिफरेंस इन सेल्स. COGS में डिफरेंस होता है, उससे प्रॉफिट चेंज हो जाता है. नाउ वी सोल्ड हाउ मच. अच्छा, वी विल अस्यूम ऑल द सेल्स एंड ऑल द परचेजेस और ऑन कैश बेसिस. There is no credit transaction. All the transactions are cash transactions. These are cash transactions. क्योंकि हमको बिगिनिंग वैल्यू कैश की दी है ना, तो हमको ये भी तो मालूम पड़ना पड़ेगा कि कितना कैश आया कितना गया. तो all the sales that we are making are cash sales. All the purchases we are making are cash purchases. तो सेल्स कितनी हुई है? 100 क्वान्टिटी we sold at the price of, sorry not 100, we sold 40 क्वान्टिटी at the price of 20. तो ये 800 हुआ यहाँ पे. Then we sold 50 quantity at the price of again 20. तो ये 1000 हो जाएगा. तो टोटल सेल्स दैट वी अचीव्ड इज 1800. ये हमारी टोटल सेल्स है. नाउ विल कैलकुलेट द COGS. COGS कैलकुलेट करेंगे LIFO फॉर्म का. टू कैलकुलेट द COGS हम ये मानते हैं कि हम परपेचुअल मेथड से ही चलते हैं. हमने ओवरऑल सेल्स कितनी की? 90 की सेल्स की. अब अगर हम यहीं पे एट द एंड ऑफ द ईयर, जब ये दिसंबर को ये अकाउंट्स क्लोज हो रहा है तो एट द एंड ऑफ द ईयर पे ही हम चेक करेंगे. तो वी सोल्ड 90 क्वांटिटी, 50 और 40. एंड LIFO में हम लास्ट इन फर्स्ट आउट करेंगे. तो लास्ट इन फर्स्ट आउट में हम 80 क्वांटिटी यहाँ से ले लेंगे. COGS 80 जो हमने अगस्त में परचेज़ की थी. तो 80 क्वांटिटी हम यहाँ से ले लेंगे. 80 इंटू किस प्राइस पे परचेज़ की थी? 15 पे परचेज़ की थी. तो ये 18 इंटू 15 हो जाएगा 1200. एंड द रिमेनिंग 10 क्वांटिटी, बिकॉज वी सोल्ड 90 क्वांटिटी, द रिमेनिंग 10 क्वांटिटी विल बी फ्रॉम दिस लॉट 100. इसमें से हम 10 ले लेंगे. किसको किस प्राइस पे खरीदा था? 10 पे खरीदा था. तो इट विल बी, सॉरी, रिमेनिंग 10 क्वांटिटी इट विल बी 100.
So COGS of LIFO firm will be 1300. Now what will be the profit? There is no other transaction. So what will be the profit of the firm? Profit of the firm will be 500. And if we assume the tax rate as 30%, so we'll reduce the taxes 150. There is no other transaction, so I'll get my net income here. My net income will be 350. I suppose you do not have any doubt in this calculation. Do you? Do you guys understand this? Right? Now let's go to FIFO calculation, FIFO accounts. Why we are calculating FIFO accounts? Why we are not using these formulas? We'll calculate the FIFO accounts, then we'll apply these formulas on these figures and we'll match whether we are getting the same results in FIFO accounts, whatever amount we are getting in FIFO accounts, whatever answers we are getting in FIFO accounts, and whatever answers we are getting after converting LIFO to FIFO, right? So here I'll write FIFO account. So I'll write sales. My sales is same 40 into 20, which is 800, and 50 into 20, which is 1000. So it comes out to 1800. My COGS will be different. COGS of the FIFO firm would be different. The firm sold 90 units. This is the sales. Firm sold 90 units, but that entire 90 units, the entire 90 units for COGS calculation will be taken from this lot of 100 units, first in, first out. This lot of 100 unit came first, it was purchased first, so it will become part of our COGS. So 90 into 10, the price of the purchase was 10, so 90 into 10, COGS will be 900. So there is only single calculation, so COGS will be 900. Clear? What will be the profit of the firm? There is no other transaction. We assume there is no other transaction, so profit of the firm would be 900. We reduce the taxes. We assume 30% tax rate, so taxes would be 270, and we get net income of the FIFO firm as how much? 630. So this is the net income of FIFO firm, and this is the net income of LIFO firm. Any doubts in this? Now we are not done yet. We'll calculate the ending inventory of the LIFO firm. And FIFO firm, both. Ending inventory. Ending inventory. What will be the ending inventory of the LIFO firm? While calculating COGS, while finding out the COGS of the 90 units, we took this 80 units completely and we took 10 units from here. So we purchased 100 here, 10 were used in COGS, 90 units are left at the price of 10. Are you getting this point? This 90 unit from this lot, we consumed this 80 unit completely. Here it is. We consumed only 10 from it, so we have 10 units here. So 90 from this lot will be remaining in our COG, in our ending inventory of the LIFO firm. So 90 into 10 is equal to 900. This is the ending inventory of the LIFO firm. What will be the ending inventory of the FIFO firm? To calculate COGS for 90 units, we took all the 90 units from this lot, first in, first out, because this is the earliest purchase. So 10 units from this lot
and 80 units from this lot are left. So 10 into 10, 100, and 80 into 50. So 10 into 10, 100, and 80 into 15, 1200. So ending inventory is 1300. Any doubt in this? Ending inventory of LIFO firm is 900. Ending inventory of the FIFO firm is 1300. Do you get this? Guys, any problem? Right. Now, after calculation of ending inventory, what we have calculated so far, we have calculated COGS, we have calculated profits, we have calculated COGS, we have calculated taxes, we have calculated net income, and we have also calculated ending inventory. Now we have to calculate the cash. And we have the beginning value of cash for both the firms, 5000. We have to find out the ending value. Achha, first of all, we have to calculate the LIFO reserve. Tell me the LIFO reserve. How much will be the ending value of the LIFO reserve? 400. Exactly. The ending value of LIFO reserve is 400. This is the difference between this inventory and this inventory, 400. So ending inventory of the LIFO reserve is 400. So let me write 400 here. 400. Ending inventory of LIFO reserve. Now we have to calculate the cash balance for both the firms. Ending cash, ending value of cash. To calculate the ending value of cash, we'll use the beginning value of cash. So let me write here, ending cash is equal to beginning. I'll write direct figures only. 5000. This is the beginning value of cash. What should I add? If we assume all the transactions are cash transactions, all the sales we are making are cash sales, all the purchase we are making are cash purchases. So I'll have to write 1800 as cash sales. This is the cash I received, right or wrong? This is the cash received on selling of 90 units. Now what is the purchase? How much quantity did I purchase? Will I write this 1300 in purchases? I'll write entire 2200 in purchases. Try to understand this. How much quantity did I purchase? This 1300 is my COGS. If I am the LIFO firm, this 1300 is my COGS. This is the quantity I purchased. Or this 1300 plus 900. I not only purchased this 1300, I also purchased this 900. Don't you think so? See, I purchased 100 quantity at the price of 10. So one purchase is of 1000. I again purchased 80 quantity at the price of 15. Another purchase is of 1200. So my total purchases is 2200. Out of this 2200, my COGS is 1300. 1300 worth of quantity is consumed in COGS, and 900 worth of quantity is left with me in the form of ending inventory. Isn't it? So my total purchases is 2200. So my total cash outflow will be 2200. I'll reduce 2200 from here. Anything else that I need to add or deduct from the beginning balance of cash? Do you suggest any other amount apart from sales and purchases? Any other amount which I need to deduct or need to add? No? Yes, there is another amount which I need to deduct, that is taxes. Taxes are always paid in cash. I paid 150 rupees in the form of taxes. So what my ending cash balance will be? -18 minus 22,
4450, isn't it? 4450. This will be my ending cash balance. So I'll write ending cash balance. I have to write two different balance. So if I am writing LIFO reserve here, so let me tell you, this is my LIFO account, है ना? This is the account of LIFO firm. क्योंकि LIFO रिजर्व तो वही मेंटेन करती है, बट यहाँ पे मैं FIFO फॉर्म का अलग से बना देता हूँ. यहाँ पे FIFO फॉर्म के लिए, FIFO अकाउंट के लिए एंडिंग वैल्यू मैं बना देता हूँ यहाँ पे. उसमें ये तो नहीं आएगा LIFO रिजर्व, कैश आ जाएगा, वो मैं कैलकुलेट करूँगा. इक्विटी आ जाएगा, वो मैं कैलकुलेट करूँगा. ठीक है. नाउ दिस 400 इज द LIFO रिजर्व एंड what will be the cash balance for LIFO account? Cash balance, ending value of cash would be 4450. ठीक है. What will be the ending value for FIFO account, for FIFO firm? तो ending value of cash would be 5000, the beginning value of cash, plus 1800 the sales, minus 2200 the purchases. We purchase the same amount of quantity. The difference is we are reporting different set of quantity in COGS and different set of quantity at in ending inventory, but the total amount of quantity is same. See, you can check. COGS is 900 and ending inventory is 1300. So 900 plus 1300 is 2200. This is what we purchased. 2000 में से मैं और क्या माइनस करूँगा? What other amount I need to deduct? That is taxes. Taxes are paid in cash. तो 270 रुपीज़ टैक्सेस भी माइनस हो जाएंगे. सो व्हाट विल बी द एंडिंग कैश बैलेंस ऑफ FIFO अकाउंट? हाउ मच इट इज कमिंग? 4600, 4400, 4330. Clear? 4450 and 4330. These are two different cash balances. One for LIFO firm and one for FIFO firm. So 4330. My cash balance is 4330. Ending value of cash. Now I have to calculate the ending value of equity for both the firms. To calculate the ending value of equity for both the firms, what I need to do, we have studied what items are included in statement of changes in equity. Here we will include only this profit, the net income. There is nothing else to be included. So what is the net income? Net income is 350, net income is 630. So ending value of inventory, ending value of equity, ending equity would be 10,000 plus 350. The net profit 10,350, and here ending equity would be 10,000 plus what is the net income? 630. So ending equity would be 10,630. 10,350, 10,630. So let me write it here. 10,350 and 10,650. Do you guys have any doubt in this? All the calculations that we have made so far, we have done so far. Any doubts? You can check the question, you can check the example, you can check the solution. If you have any doubt, you are free to ask. These are the separate calculations which we have done for LIFO account and for FIFO account. Now what we are going to do, we are going to convert those LIFO accounts using these formulas into FIFO accounts and check whether we are getting the same answers. Are we going to get the same COGS? Are we going to get the same net income? Are we going to get the same taxes? Are we going to get the same cash balances? Are we going to get the same equity balances? Right? Any doubt so far?
No? Now let us start. First of all, I'll start with LIFO. First calculation is straightforward, we have done so many times. That calculation is conversion of LIFO account to FIFO account. First calculation is FIFO inventory. It is LIFO inventory plus LIFO reserve, right? So what is LIFO inventory in our example? Let's scroll up. LIFO inventory is 900, and what is LIFO reserve? The ending value of LIFO reserve is 400. So I'll write 900 here, I'll write 400 here, and the FIFO inventory has to be 1300. Did I get the FIFO inventory as 1300? Yes sir, we got the FIFO inventory as 1300. So this is the very simple formula sir, we have already used this formula so many times. ठीक है, let's check on other formula. Second, FIFO COGS. FIFO COGS, we have LIFO COGS, and which COGS is lesser? FIFO COGS is less or LIFO COGS is less in case of inflation? In case of inflation, which COGS has lower value, FIFO or LIFO? FIFO. So that's why LIFO COGS is higher. So to convert LIFO to FIFO, we will deduct the difference amount from LIFO COGS, and the difference amount would be change in LIFO reserve. Here in this example, to keep it simple, we took the beginning value of LIFO reserve as 0 and the ending value we got as 400. So 400 में से 0 को माइनस करेंगे तो चेंज भी 400 ही आएगा. तो LIFO COGS was, what was the LIFO COGS? LIFO COGS was 1300. और 1300 में से जो चेंज है 1300, उसमें से चेंज इन LIFO रिजर्व कितना हो जाएगा? 400. चेंज होगा एंडिंग माइनस बिगनिंग, तो बिगनिंग तो 0 है, तो 400 माइनस 0 400 आएगा, तो ये आएगा 900. 900 is the FIFO COGS. FIFO COGS is 900. So this is the FIFO COGS 900. ठीक है, this is the FIFO inventory 1300. क्लियर? दो वैल्यूज हमारी एग्जैक्टली आ गई यूजिंग द कन्वर्जन फॉर्मूला. देन थर्ड, let's calculate. What should we calculate? FIFO net income. FIFO net income. Which firm will have a higher net income, LIFO firm or FIFO firm, in case of rising prices of inventory? Because FIFO firm would have a lower COGS, FIFO firm will have a higher net income. The firm that has lower COGS will have higher income. So FIFO firm's net income would be higher as compared to LIFO firm. So we are going to add the difference amount. Now the difference in COGS, understand this, the difference in COGS is 400. The COGS of the LIFO firm is higher by 400, so profit of the LIFO firm has to be lower by 400. Similarly, the COGS of FIFO firm
is lower by 400, so the profit of the FIFO firm has to be higher by 400, but there is a catch. This profit, we are not calculating the profit before tax, we are calculating the net income. Net income is calculated after paying the taxes. So टैक्स का एडजस्टमेंट भी इसमें करना पड़ेगा. तो ये आ जाएगा, प्लस करेंगे, लीफो का नेट इनकम कम होता है तो प्लस चेंज इन लीफो रिजर्व. दिस इज द अमाउंट विच मेक्स डिफरेंस इन प्रॉफिट, लीफो रिजर्व, चेंज इन लीफो रिजर्व इनटू 1 माइनस टी, बिकॉज वी आर पेइंग टैक्सेस ऑन इट, इनटू 1 माइनस टी कर दिया. तो जो भी प्रॉफिट में डिफरेंस आया, उस प्रॉफिट में डिफरेंस आया वो आफ्टर टैक्स इफेक्ट उसका लगाना पड़ेगा, बिकॉज वी हैव टू कैलकुलेट नेट इनकम. तो यहाँ पे लीफो नेट इनकम कितना आया था? लीफो नेट इनकम वॉज 350 प्लस चेंज इन लीफो रिजर्व कितना है? 400 इंटू 1 माइनस टी. टी इज your tax rate is 30%, so 1 minus t would be 70%, 0.70. So I'll directly write 0.70 here. For 400 into 0.70 would be 280, so 350 plus 280, so it comes out to 350, 450, 550 and 630. Are we getting the FIFO net income as 630? Yes, we have the FIFO net income as 630. See, 630. You got this calculation? The difference in profit would be 400, the same which is the difference in COGS. The difference in COGS is 400, so difference in profit would be 400. But we have to calculate the net income. Net income is received after paying the taxes, so we have to make adjustment of the taxes, 1 minus t. So change in LIFO reserve is the change in profit. 1 माइनस टी कर दिया तो उसका जो टैक्स इफेक्ट है वो आ गया. तो आफ्टर टैक्स जो प्रॉफिट हमको रिसीव हुआ ये 400 पे, वो हमने यहाँ पे रिपोर्ट कर दिया. आर यू गेटिंग दिस? क्लियर? FIFO नेट इनकम 630, चेंज इन LIFO रिजर्व इनटू 1 माइनस टी. नेट इनकम बोला है, ठीक है. ग्रॉस प्रॉफिट बोलते, चेंज इन ग्रॉस प्रॉफिट तो 1 माइनस टी नहीं करते, केवल ये चेंज इन LIFO रिजर्व कर देते. Then we'll calculate FIFO taxes. हाँ, नहीं, we are not adjusting LIFO reserve. Actually we are trying to find out the net income. और नेट इनकम तो टैक्स माइनस करके ही आता है. सी, फर्स्ट ऑफ ऑल विल हैव टू सी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन FIFO फर्म एंड LIFO. व्हाट इज द डिफरेंस इन द प्रॉफिट ऑफ FIFO फर्म एंड LIFO फर्म? द डिफरेंस इन द प्रॉफिट इज वॉट एवर प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड एवरी ईयर. सो डिफरेंस इन प्रॉफिट इज द डिफरेंस टुक प्लेस इन COGS एंड दैट डिफरेंस इज कैलकुलेटेड एज चेंज इन LIFO रिजर्व, एंडिंग माइनस बिगनिंग. तो चेंज जो LIFO रिजर्व में हुआ वो यहाँ पे लिख दिया, चेंज इन LIFO रिजर्व. This is the amount by which the profit of both the firms would differ, because this is the amount by which the COGS of both the firms differed, right? But because we are calculating net income, ये जो प्रॉफिट का डिफरेंस क्रिएट हुआ दोनों फर्म में, इस पर टैक्स भी तो पे करना पड़ेगा. वन फर्म अर्न हायर प्रॉफिट तो उस पर टैक्स भी तो पे करना पड़ेगा. तो टैक्स पे करने के बाद कितना उस फर्म का प्रॉफिट ज़्यादा होगा? बिकॉज दैट फर्म विच अर्न हायर प्रॉफिट, FIFO फर्म अर्न हायर प्रॉफिट, दैट FIFO फर्म हैज़ टू पे द टैक्सेस एज 30% ऑन दिस डिफरेंस अमाउंट. तो 1 माइनस टी कर दिया, क्योंकि 30% तो उसको मिला ही नहीं ना. तो 400 का डिफरेंस आया प्रॉफिट में, बट उसका 30% 120 रुपीज़ उसने टैक्स पे कर दिया. 120 रुपीज़ बेसिकली उसने एडिशनल टैक्स पे किया देन LIFO फॉर्म. तो 400 में से 120 माइनस किया तो 280 आया. आफ्टर टैक्स प्रॉफिट इतना ज़्यादा मिला FIFO फॉर्म को, तो वो LIFO फॉर्म के प्रॉफिट में हमने जोड़ दिया आफ्टर टैक्स प्रॉफिट नेट इनकम. तो ये आ गया 630. क्लियर? वी आर नॉट ट्राइंग टू एडजस्ट द LIFO रिजर्व, वी आर ट्राइंग टू एडजस्ट द प्रॉफिट. वो जो टैक्स का इफेक्ट है वो प्रॉफिट में दे रहे हैं हम, नॉट इन LIFO रिजर्व. ठीक है, बेसिकली हमको क्योंकि ये नेट इनकम निकालना है ना, इसलिए हमने, यू आर थिंकिंग कि ये जो 1 माइनस टी किया है LIFO रिजर्व में किया. नहीं, ये जो चेंज है, चेंज इन LIFO रिजर्व, दिस इज द डिफरेंस इन प्रॉफिट ऑफ बोथ द फर्म्स.
डिफरेंस इन प्रॉफिट, ठीक है. फीफो फॉर्म अर्नड दिस मच प्रॉफिट हायर देन द लीफो फॉर्म, बट फीफो फॉर्म हैड टू पे टैक्सेस ऑन दिस डिफरेंस अमाउंट, राइट. तो जो टैक्स पे करना पड़ा वो टैक्स का माइनस करने के लिए हमने 1 माइनस टी किया. तो वो टैक्स पे करने के बाद हाउ मच एक्स्ट्रा प्रॉफिट फीफो फॉर्म अर्नड, तो वो 280 आया. गॉट इट नाउ? Yes, sir. Sure. Then comes FIFO taxes. Which firm would end up paying higher taxes, LIFO or FIFO? The firm which is earning higher profit. FIFO firm earning higher profit, FIFO firm would pay a higher amount of tax. तो LIFO taxes लिखेंगे हम, उसमें ऐड कर देंगे LIFO रिजर्व इनटू टैक्स रेट. यहाँ 1 माइनस टी नहीं करेंगे, बिकॉज वहाँ 1 माइनस टी क्यों किया तो ऊपर वाले कैलकुलेशन में, बिकॉज इन दैट कैलकुलेशन वी हैड टू कैलकुलेट हाउ मच वी आर receiving after paying taxes. What is net income after paying taxes? Here we have to calculate what is the tax we are paying. So we are not doing 1 minus t, we are doing only t, tax rate. हम tax rate का multiply कर रहे हैं. तो what is the LIFO what is the LIFO taxes? How much tax we are paying? What is the tax we are paying? कहाँ गया ये 150. द लीफो फॉर्म इज पेइंग टैक्सेस एज 150, राइट. तो आई विल राइट 150 हियर प्लस व्हाट इज द लीफो रिजर्व 400. व्हाट इज द टैक्स रेट 30%, 0.30. तो 400 का 30% कितना हो जाएगा 120. सो 150 प्लस 120, so it will come out as 270. So are we paying 270 taxes? FIFO firm, are you paying 270 taxes? Yes, we are paying 270 taxes. 270, right? Any problem in this calculation? FIFO taxes is equal to LIFO taxes plus LIFO reserve into tax rate. Any doubts so far? No, sir. No. There is there is one point to remember here, and that point is here we are taking change in LIFO reserve. Here we are taking entire LIFO reserve. In this particular example, the change in LIFO reserve and LIFO reserve is same because we assumed beginning value as 0. But if we had some other beginning value, other than 0, then LIFO reserve would be different than change in LIFO reserve. अब यहाँ पे LIFO reserve क्यों लिखा है? देखो मैंने आपको बार बार ये बताया है. I'll tell one more time that change in LIFO reserve is basically the difference between FIFO account and LIFO account for one particular period, 1 year. But this LIFO reserve is nothing but the accumulated value for all those years since the companies are using LIFO and FIFO, right? तो टैक्सेस को LIFO एक्यूमुलेटेड फिगर में क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हो? क्योंकि लास्ट ईयर भी तो इस कंपनी ने ज़्यादा टैक्स पे किया होगा, उसके लास्ट ईयर भी तो ज़्यादा टैक्स पे किया होगा, उसके लास्ट ईयर भी तो ज़्यादा टैक्स पे किया होगा. सो हमको एक्यूमुलेटेड अमाउंट चाहिए टैक्सेस का कि ओवरऑल उन्होंने कितना ज़्यादा टैक्स पे किया है अभी तक, राइट? ठीक है. और यही एक्यूमुलेटेड अमाउंट आगे किस में आ जाएगा? यही एक्यूमुलेटेड अमाउंट आगे उनके कैश रिजर्व्स में भी आ जाएगा. तो FIFO कैश, क्योंकि कैश भी तो कैरी फॉरवर्ड होता है ना, कैश भी कैरी फॉरवर्ड होता है. एक साल ज़्यादा टैक्स पे किया तो कैश कम हो जाएगा, दूसरे साल और ज़्यादा टैक्स पे किया तो कैश और कम हो जाएगा. नाउ टेल मी वन थिंग, विच फर्म विल हैव अ लोअर कैश? द फर्म विच इज पेइंग हाई टैक्सेस विल हैव लो कैश,
तो FIFO firm paying higher taxes, so FIFO firm will have low cash than LIFO firm. So I'll write LIFO cash minus, I'll reduce. What I'll do, I'll write here LIFO reserve into tax rate. See, when we calculated the cash, this 1800 is same, the amount of sales we made. This 2200 is same, the amount of purchases we made. The difference was created due to the different amount of taxes. This firm is paying only 150 in taxes, this firm is paying 270 in taxes. So payment of tax will create the difference in cash. So that's why LIFO cash of the firm, ending cash balance of 4450, cash of the LIFO firm 4450 into 400 into what is the tax rate, minus 400 into 30%, 0.30. So 4450 minus 120 is 4350, 4330. Are we getting the cash balance 4330 for FIFO firm? Yes, we are getting the cash balance as 4330 for FIFO firm. Right? What is the shareholders' equity? I think we just have to calculate shareholders' equity now. What is the shareholders' equity? So FIFO firm's shareholders' equity is equal to LIFO equity. Which firm will have a higher equity? The firm which is having higher profit. Which firm is having higher profit? FIFO firm having higher profit. So we'll add LIFO reserve into 1 minus T. Why 1 minus T? Because why not into C? Why LIFO reserve into 1 minus T? Why not LIFO reserve into tax rate? Because this is the amount which is retained by us after paying the taxes, which will be added to the equity. जब हम कैश कैलकुलेट करते हैं जो हमने पे कर दिया, या टैक्स पे कैलकुलेट करते हैं जो हमने पे कर दिया, तो हम टैक्स रेट का मल्टीप्लाई करते हैं, बिकॉज वी आर कैलकुलेटिंग द टैक्स अमाउंट पेड बाय द FIFO फॉर्म. तो टैक्स रेट 30% जो हमने पे किया. कैश देखते हैं तो 30% जो हमने पे किया, बट जो हमने रिटेन कर लिया वो तो टैक्स पे करने के बाद जो आता है वो है ना. तो शेयर होल्डर्स इक्विटी में वो प्रॉफिट ऐड होता है जो हमने रिटेन कर दिया आफ्टर पेइंग द टैक्सेस. तो इसलिए 1 माइनस टी किया यहाँ पे. तो शेयर होल्डर्स इक्विटी, LIFO इक्विटी इज 10,350 जो कि प्रॉफिट था, ऐड हुआ, प्लस LIFO रिजर्व कितना है 400 है, इंटू 1 माइनस टी करेंगे तो 0.70 हो जाएगा. 0.70 हो जाएगा तो 280 हो जाएगा. तो 10,350 प्लस 280, 10,350 प्लस 280, 450, 550, 10,630, 630. Are we getting 10,630? Yes, we are getting 10,630. ये रहा. Did you get this? Clear हुआ सारे कैलकुलेशन, all the calculations that we made. ठीक है. So this is how we convert LIFO account to FIFO account. LIFO अकाउंट दिया हो तो उससे आप कोई सा भी FIFO अकाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं. LIFO बैलेंस इफ यू हैव बीन गिवन, यू कैन कैलकुलेट एनी FIFO बैलेंस फ्रॉम दैट फिगर. क्लियर? यू हैव टू मेक सर्टेन एडजस्टमेंट्स. Why do we do this? We do this to make any LIFO form comparable with FIFO form. Clear?